काले धन पर विशेष जांच दल यानी एसआईटी के चेयरमैन न्यायाधीश सेवानिवृत्त एमबी शाह ने 1000 रुपए और 500 रुपए मूल्य के नोटों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को साहसी कदम बताते हुए कहा कि इससे काले धन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ा कदम है, बोल्ड डिसीजन है, करेजियस मैन कैन टेक ओनली, ऐसा डिसीजन है। इस डिसीजन से सबसे फ़ायदा तो सोसाइटी को ही होगा। आम आदमी तो अभी सोचता है कि ये डिसीजन बहुत अच्छा हुआ क्योंकि दे हैव समथिंग दैट दोज पर्सन्स हु आर हैविंग अनअकाउंटेड मनी दे लिव लेविशली एंड दैट दे कैन नॉट एंजॉय दैट फैसिलिटी विच these persons having unaccounted money are enjoying। आम आदमी अभी खुश है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ। ये अच्छा क्यों हुआ? The reason is they think that those persons who are having unaccounted money they are exploiting the situation in the country। and आप देखो कोई भी जगह पे जाओ, कॉमन मैन को पूछो, some hardship would be there in getting back some money, but that hardship is minimal। It will be for few days, but overall situation it would be so good that for the time being unaccounted money or circulation of unaccounted money or so-called parallel economy will be completely closed। That is one of the best achievement of this government, whatever some persons may say, but at the same time all of a sudden without informing anyone, without discussing with anyone, this was pronounced and it has own effect on the country as a whole। साथ ही एमबी शाह ने कहा कि इस फैसले से बाजार में मौजूद काला धन तो समाप्त होगा ही, साथ ही इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मैंने ऐसा लिखा है कि इट्स अ बोल्ड डिसीजन which was required to be taken in the interest of economy of the country as a whole। The reason is, main reason is, बहुत से लोग even though the scheme was for declaration was pronounced, they were not prepared to declare their unaccounted money। What they were doing, in some cases half of the amount is declared, in some cases less is declared, in some cases they were not prepared to disclose anything। इस कदम से बढ़िया चीज़ तो ये होगी कि सब all amount unaccounted money would be waste paper, and that is the reason why economy would be benefited, because for the time being it would be run by the accounted money only।